Similarity and dissimilarity. It is based on similarity and dissimilarity. बात समझ गया? Next लिखो, study of classification is known as taxonomy. Study of classification is known as taxonomy. Study of classification is known as taxonomy. Next लिखो, further of taxonomy, Carolus Linnaeus, Carolus Linnaeus, father of taxonomy, Carolus Linnaeus. लिख लिया? हेडिंग डालो, नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन. हेडिंग डालो, नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन. नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन. नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन. नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन. Needs for classification. It help in understanding the phylogeny. It help in understanding the evolutionary history of organism. Evolutionary history of organism. Evolutionary history of organism. It makes the study of organism. It makes the study of wide variety of organism. It makes the study of wide variety of organism. Wide variety of organism. Next heading डालो, major categories of classification. Major categories of classification. Categories of classification. इसमें लिखो kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Family, genus, species. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. लिख लिया बेटा? Yes, ma'am. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. लिखो smallest unit of classification. Smallest unit of classification is known as smallest unit of classification. Smallest unit of classification. Unit of classification is known as
species, species, लिख लिया. Group of species is known as, group of species is known as genus. Group of species is known as genus. अब heading डालो five kingdom system of classification. Five kingdom system of classification. Heading डालो. Five kingdom system of classification. लिख लिया. It was proposed by R.H. Whittaker. Proposed by R.H. Whittaker. It was proposed by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker. Proposed by R.H. Whittaker. According to this classification, Kingdom Monera, number 1. 5 kingdoms are as follows. 5 kingdoms are as follows. Number 1, Monera, Protista. Number 1, Protista. Number 1, Monera. Number 2, Protista. Fungi, Plantae, Animalia. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Plantae, Animalia. अब हेडिंग डालिए किंगडम मोनेरा. हेडिंग डालिए किंगडम मोनेरा. These are the unicellular prokaryotic organism. These are the unicellular prokaryotic organism. It includes bacteria. Ma'am, these are the simple unicellular prokaryotic organism. It includes bacteria. Heading डालो bacteria. Study of bacteria is known as bacteriology. Heading डालो bacteria. Study of bacteria is known as bacteriology. बैक्टीरिया डिलीटेड है क्या बेटा?
मैम बैक्टीरिया बैक्टीरिया डिलीटेड है, डिलीटेड है। तो फिर छोड़ दो इसको। और फंजाई, प्रोटिस्टा, मैम ये नहीं है डिलीट। प्रोटिस्टा डिलीटेड नहीं है ना। नो मैम और फंजाई, ये भी नहीं। माइकोटा, माइकोटा भी डिलीटेड नहीं है ना। लिखो, तो सबसे पहले बैक्टीरिया हटा दो। लिखो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। These are simple unicellular, these are simple unicellular eukaryotic organism. These are simple unicellular eukaryotic organism, eukaryotic organism. Next, they have a well-defined nucleus. They have a well-defined nucleus, and they have a well-defined nucleus and well-defined nucleus and membrane bond cell organelles. They have well-defined nucleus and membrane bond cell organelles. Membrane bond cell organelles. Membrane bond cell organelles. Next लिखो, locomotory organelles are present. Locomotory organelles are present such as pseudopodia, present in amoeba, present in amoeba, cilia, present in paramecium, flagella, present in euglena. Present in euglena. हो गया बेटे। इसमें एग्जाम्पल लिखो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास एक्सेट्रा, सॉरी डायटम्स एक्सेट्रा। हो गया प्राची। यस मैम। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। It includes, it includes, it includes Mycota group, Mycota group. Study of fungi is known as mycology. Study of fungi is known as mycology. Study of fungi is known as mycology. Mycology. Mycology.
these are heterotropic, these are heterotropic, heterotropic multicellular, multicellular organism, organism. Cell wall is made up of fungal cellulose, fungal cellulose, and cell wall is covered by, cell wall is covered by, cell wall is covered by chitin. Chitin. Cell wall is covered by chitin. These are saprotroph. These are saprotroph. These are saprotroph. Saprotroph. Troph and decomposers. Decomposers. Saprotrophs and decomposers. And decomposers. Stored food present in the next point. Stored food present in the form of, stored food present in the form of, in the form of glycogen. Stored food present in the form of glycogen. Yeast is unicellular fungi. Yeast is unicellular fungi. Yeast is unicellular fungi. लिख लिया? Yes, ma'am. Body is made up of several thread-like structure. Body is made up of several thread-like structure. Body made up of several thread-like structure. Thread-like structure. Structure known as mycelium. Single thread, thread-like structure is known as hyphae. Group of hyphae is known as mycelium. Group of hyphae is known as mycelium. Example लिखो. Mucor, Rhizopus, Agaricus. इसके ब्रैकेट में लिखो मशरूम, yeast, etc. लिख लिया बेटा? ये चैप्टर हो गया कंप्लीट. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. कुछ बचा है इसमें?
आप पूरे सिलेबस में देख लेना कुछ बचा है क्या। आपका ये चैप्टर हो गया, फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेल हो गई, सारा कुछ वाई डू फॉल इन हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। कुछ है, कोई डाउट है, कोई एक्स्ट्रा चीज है तो बताओ। प्राची, नो मैम। सब कुछ आ गया है ना? अब बस रिवीजन की रिक्वायरमेंट है ना? अर्हित, यस। अर्हित क्लास में है? यस मैम। बहुत दिनों बाद आया अर्हित। अर्हित कोई डाउट है? सिलेबस आज खत्म हो गया पूरा, बस रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। रिवीजन की रिक्वायरमेंट, आप लोगों को रिवीजन के टाइम दिया जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा, जो भी टर्न लगेगा आपका। सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका। से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी। है डाउट? प्राची, अर्हित, नो मैम। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे लीव कर दें। अच्छे से प्रिपेयर करो, रिवीजन जब भी चैप्टर का हो मिलते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है बच्चों? क्यों बेटा? प्राची, अर्हित, ओके मैम। ठीक है। प्राची, प्राची, यस मैम। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम, नो मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक, तो ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय। अब मिलते हैं रिवीजन पे, ठीक है? रिवीजन का जो टाइम होगा उस पे मिलते हैं हम लोग, ठीक? ओके मैम। गुड और आफ्टरनून। कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पेपर आए, यूटी हाफ ईयरली, तो उसमें आप कभी भी टाइम लेके हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? ओके मैम। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून बेटा, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून।